Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for +1 Arts Political Science, and the name of the chapter is Social Justice. Now let us start with the topic proportionate justice. जो equal treatment है is not the only principle of justice. इसलिए कई बारी ऐसे circumstances आ जाते हैं in which we might feel that treating everybody equally would be unjust. For instance, would you react it was decided in your school कि जो all students हैं who did an exam should get equal marks because they are all student of the same school and the same class did the same exam. ये एक एग्जाम्पल है कि क्या आप उनको इक्वली ट्रीट करोगे. हियर यू माइट थिंक इट वुड बी more fair if students were awarded marks according to the quality of their answer papers and also possibly the degree of effort they had put in. Other words, provided everybody starts from the same baseline of equal rights, justice in such cases would mean rewarding जो people हैं in proportionate to the scale and quality of their efforts. Mostly जो लोग हैं would agree that although people should get the same reward for the same work, it would be fair and just to reward different kinds of work differently. अगर हम इस चीज को अकाउंट में लेके चलते हैं कि such as effort required, the skill requires, the possible dangers involved in that work and so on. If we use these criteria, हम ये फाइंड करते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स जो हैं हमारी सोसाइटी में उनको एक जैसे वेजेस नहीं पे किए जाते, which take such factors sufficiently into account. For instance, minor skilled craftsmen, people in sometimes dangerous but socially useful professions like policeman may not always get a reward which is just. If we compare it to what some others in society may be earning. For justice in our society, जो principle है equal treatment, उसको needs had to be balanced with the principle of proportionality. Let us start with the other topic, recognition of special needs. Third principle है justice का means recognize is for a society to take into account special needs of people while distributing rewards duty. This would be considered a way of promoting social justice. In terms of their basic status, rights as members of the society, justice जो है रिक्वायर करता है people must be treated equally. But even नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो होती है लोगों के बीच में एंड रिवार्डिंग दैम proportionality to their efforts might not be enough to ensure that people enjoy equality in other aspects of their life in the society, nor that the society as a whole is just. जो प्रिंसिपल है टेकिंग अकाउंट ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरली कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट. इसलिए सो मच एज एक्सटेंड इट बिकॉज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटिंग equally could imply that जो people हैं who are not equal in certain important respects could be treated differently. People with special needs like disabled peoples could be considered unequal in some particular respect. इसलिए deserving of special help they need, but it is not always easy task to get agreement regarding which inequalities of people should be recognized for providing them special help. जो फिजिकल डिसेबल पीपल हैं, एज, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन है
हेल्थ केयर नहीं मिलती, कुछ अदर फैक्टर्स हैं विच आर कंसिडर्ड ऑन द ग्राउंड फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन मैनी कंट्रीज. सो इट इज़ बिलीव दैट पीपल जो हैं इंजॉय करते हैं हर डिफरेंट स्टैंडर्ड को, लिविंग को, और उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इसलिए इनको ट्रीट किया जाना चाहिए इक्वली इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद दोज हु हैव डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक मिनिमम नीड्स इन द लाइफ, लाइक हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोडक्टिव लाइफ. द रिजल्ट जो है इसका है लाइकली टू बी एन अनइक्वल सोसाइटी, नॉट एन इगैलिटेरियन एंड जस्ट वन. हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जैसे कि गुड एजुकेशन, हेल्थ केयर, अदर सच फैसिलिटी जो कि यहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाती. सो ये फैसिलिटीज जो है ऑफन फाउंड कंबाइंड विद सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए अलाउ करता है रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर कोटास इन फॉर एडमिशन टू अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट जॉब्स, और फॉर सच टाइप ऑफ पीपल लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. जो ये डिस्कशन है डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हमें ये इंडिकेट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसको कोई ना कोई ऐसा वे फाइंड करना चाहिए जिसके कारण सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले. बट आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू हार्मोनाइज 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो हमने अभी डिस्कस किए, like equal treatment for equal recognition of different efforts and skill while determining rewards and burden, and provision of minimum standard of living and equal opportunities to the needy. So pursuing equality of treatment by itself sometimes work करता है against giving due reward to merit. Emphasis rewarding merit as main principle of justice might mean that marginalized section would be disadvantaged in many areas. They have not access to facilities such as good nourishment or education. Different groups in the country जो है might favor different policy. ये depend करता है principle of justice they emphasize. So ये function है गवर्नमेंट का कि ये जो justice वाले principle हैं सभी को provide करें ताकि जो एक society है हमारी good बन सके. Thank you students.